Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Amit D'Souza sir with us, and he is the author of Unorthodox of Leadership and Animalism. The second book is Handful, and the third one is An Evening Full of Glowworms. Thank you so much, sir, for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you for having me. Pleasure, sir. So, sir, before we get into the podcast and know much more about your books, about your upcoming projects and everything, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और अच्छे से जान सकें. And do share how you started this writing journey as well. Well, introduction to भाई, it's very simple. I am a storyteller that sometimes gets published. उतना ही है. हाँ, ये ऑथर का टैग आई डोंट. कहानी बोलना अच्छा लगता है, कहानी लिखना अच्छा लगता है. वही है, पब्लिश हो जाता हूँ कभी कभी. राइटिंग जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो एक कंपटीशन था जिसमें स्टेट लेवल प्राइज आ गया था. तब थोड़ा सोचना शुरू कर दिया था कि शायद लिख सकता हूँ. उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, बस पब्लिश नहीं की. वेटेड फॉर मेनी इयर्स बिफोर आई कुड पब्लिश. So, what was that one moment कि लगा कि नहीं अब पब्लिश कर देते हैं, अब लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मैं कुछ लिखता हूँ. वो तो इट वाज अ बेट एक्चुअली. इट वाज वेरी स्टूपिड बेट दोस्तों के बीच में. वी वर सिटिंग एट आफ्टर वर्क, वी वर सिटिंग एट अ प्लेस इन मैंगलोर, कर्नाटक में. एंड ऐसी बात करते करते हमने बोला यार इतना ज्ञान है तो व्हाई डोंट यू जस्ट राइट अ बुक. अच्छा ठीक है, तो लेट्स राइट. तो हमने लिखा. एंड आई थिंक मैंने अपने दोस्तों की बात तभी सुनी और उसके बाद जब उन्होंने मेरी तारीफ की तब सुनी. और दोनों बार मैं गलत था, क्योंकि यही लोग मेरी तारीफ करते हैं. I said it before also. My friends only say good things about me, so I don't believe them. Very rare quality of friends, I guess. हाँ, you and I possibly are, हम वो एक लॉजिक होता है, वो भी है, कि दोस्ती यारी में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट when it comes to any work, they are very supportive, they're very, praising all the time. It is nice, it feels nice, but the reality पता होती है. Reality ठीक opposite होती है. Okay. So मेरी पहली किताब के बारे में देख लो ना. Besides me and my friends, nobody has read it. Oh. तो मुझे पता है. Okay. When it comes to the latest book, sir, An Evening Full of Glowing Worms, इस podcast को सुनने के बाद many people will just love to explore that book. They will be interested in buying and reading it. So talking from I guess new reader के perspective से अगर बात करें, so what they can expect from this book as of now? Can you share some insights? Yeah, sure. It's An Evening Full of Glowworms. So this is an anthology collection, a collection of short stories. कुछ 45 stories हैं इसमें. And it is ideal for professionals, who want to read लेकिन वो time invest नहीं कर पाते in reading a full-fledged novel. Okay. क्योंकि novel तो, it's start to end. It's one story. ये flow टूट जाता है and all of that. In the short story collection, you can read one story in 10 to 15 minutes when you're commuting to work. आप मेट्रो में हो या फिर आप ट्रेन में हो, and just read it. And you'll have one story read, one story done. So that's one. And the stories are based on real life incidents जो हम आसपास देखते हैं. उसमें it's always easier to relate to an event, an incident through a short story. I mean, you'll never be able to relate to the characters. लेकिन वो event या incident उससे relate कर पाते हैं सब लोग. That's how it is. Okay. Any specific reason? For a 10-minute commute. Any specific reason for? Any specific reason कि आपने नॉवेल को छोड़ के शॉर्ट स्टोरीज पिक किया? बिकॉज ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा या फिर अटेंशन स्पैम, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है. I was just in the mood to write short stories, so I wrote short stories. It all depends. अभी मेरे 2 full-fledged novels, they are with publishers right now. Okay.
three publishers are evaluating 3 different books. वो तो full-fledged novels है. I think in the next 4 to 6 months वो release हो जाएंगे. So here comes my next question related to this. Like इस podcast को आपके रीडर्स भी सुनेंगे जिन्होंने आपकी बुक्स पढ़ ली. So जैसा अभी आपने जस्ट शेयर किया हमारे पॉडकास्ट पे कि 3 बुक्स अभी हैं जो आ सकती हैं आने वाले कुछ महीनों में. So what are these topics? मतलब किन टॉपिक्स पे आ रही हैं आप बता सकते हैं? Like किसी और जॉनरा में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या you want to stick to these only? What's upcoming in the pipeline? So my genre is a very limited genre of audience. My genre is military action and martial arts. So वो पढ़ने के लिए there is a very limited audience. And these 3 books also are in the same genre. अच्छा. Military action है या तो फिर martial arts है. And the characters are expanded from An Evening Full of Glowworms and Handful. So उनमें से जो characters थे, they were quite interesting to me, but you know, I wasn't very happy with the arc because वो short story थी. So you can't expand on the arc or the life cycle or anything. So I decided let's pull the characters into full-fledged books. उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो Handful and Evening Full of Glowworms में टोटल 50 के आसपास स्टोरीज हैं. तो माय टारगेट इज 50 बुक्स. Wow. Definitely a long run. Yeah, long run. Okay. What I personally feel sir like ये पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया था अराउंड 2021 में फेब में. So till then I have been in conversation with more than 450 authors. उससे पहले भी हम लोग बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे authors को. So what I personally feel that most of them are trying to be known or remembered as a certain genre या फिर certain type of authors. So when it comes to you talking from a personal branding thing, okay? So when it comes to you अगर आज से 1-2 साल बाद कोई आपकी बुक पढ़ता है कि ठीक है इट्स न्यू रिलीज बाय अमित सर, तो उसके दिमाग में क्या आना चाहिए? दैट सडन थॉट, सडन इम्पैक्ट, ये ठीक है अमित सर की बुक है मुझे ऐसी मिलेगी या ये पढ़ने को मिलेगा. कभी सोचा इस बारे में? हाँ सोचा है. A new reader who's reading my book is going to experience or is going to read about very very detailed, in-depth martial arts sequences या sword fighting sequences. बहुत ही डिटेल में. लाइक एक फिस्ट कैसे बनता है या एक एल्बो का इम्पैक्ट कैसे होता है या फिर एक स्वीप कैसे होता है या इफ यू आर डूइंग अ 540 राउंड हाउस स्पिनिंग हुक तो वो उसके लिए बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सारी डिटेल्स उसको पढ़ने मिलेंगी. ओके. एंड इतनी सारी डिटेल या मार्शल आर्ट से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड जो आप लिख रहे हैं, सो व्हाट्स योर बैकग्राउंड इन दैट? लाइक आप इन सब में कभी आपने सर्व किया है? लाइक व्हाट वाज दैट? Unfortunately, I have not served in the military. It has been an unaccomplished dream. Okay. So वो नहीं कर पाया. But for the last 35 years, I've been practicing martial arts. 4 अलग-अलग styles. और अब हो गए 35 साल. सबको मिक्स मैच करते करते मजा आ जाता है. Okay. So definitely it is coming from some legit source कि आप जो भी पढ़ेंगे, it's completely experienced. हाँ, experienced. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ तक कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट है बट उनको नॉलेज नहीं उस बारे में, सो दे आर जस्ट क्वाइट बोलते जा रहे हैं या फिर लिख रहे हैं कुछ भी, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि सही है या गलत है ये. नहीं, एंड यू नो एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी टू टेल. लोग लिखते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट इज फेयर. वो लिखने के बाद somewhere down the line the person who has written it realizes that he or she needs to go and research. So eventually वो learning आ ही जाती है. Okay. So when it comes to this publishing industry thing sir, what was the most difficult part for you? Like publish करने के लिए क्या difficult था, then marketing करने के लिए क्या difficult था? Because those are completely two different things. What I personally feel sir कि when it comes to publishing it's just the 40%. Marketing and distribution is the गेम चेंजर जो कि एक बुक को काफी दूर तक ले जा सकता है. सो व्हाट आर द टू चैलेंजेस ऑन दीज ऑफ देम रिस्पेक्टिवली? या पिचिंग सबसे मुश्किल काम है. पिचिंग योरसेल्फ टू अ पब्लिशर, बिकॉज यू नो यू सेड 40%, आई से 20% इज पब्लिशिंग एंड 80% इज मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज मार्केट. ओके, यू कांट इग्नोर दैट. And thankfully most of the publishers that we have
दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. आप तो एक बुक लिखते हो या 2 बुक लिखते हो या 10 बुक लिख लेते हो. वो पब्लिशर ने 100 बुक्स पब्लिश की होगी. He or she has seen the journey of 100 books. तो उसे पता होता है क्या है, कौन सा चलने वाला है, क्या होने वाला है. Okay, so my next question to this podcast is that like when it comes to like अभी आपने बताया pitching is the most difficult thing and when it comes to marketing उसमें क्या सबसे difficult लगा आपको या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगे कि काश ये पहले पता चल गई होती तो मैं थोड़ा और easily अपनी चीज़ों को अचीव कर लिया होता या मेरी बुक ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म की होती. See, marketing is a science that is evolving every day. ऐसा कोई भी एक्सपर्ट नहीं है दुनिया में जो आके बोल सकता है कि हाँ ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चलेगी. बिकॉज द ऑडियंस इज चेंजिंग एवरी डे, द ऑडियंस इज इवॉल्विंग एवरी डे. So you never know, आज के दिन possibly an ad in the newspaper might work. 1-2 महीने बाद that will not work. You might need something on television, or then that might not work. You might need some Instagram या Amazon marketing campaign. So it's a mix and match of everything. You just need to figure out what is it that you want to achieve and how much effort are you willing to spend. The guys who are marketing, they are quite experienced in what they do. And they will come very aggressively with their campaigns. उसमें आप कितना effort डालना चाहते हो? Is it something that you have the time for, you have the bandwidth for? तो वो आप choose कर सकते हो. That is the only difficulty, but choosing which kind of strategy you want to select. Okay. Anything specifically that worked for you जो आपको लगा हो कि नहीं इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है? I don't know. मैंने कभी सोचा नहीं. अच्छा. I mean, sometimes it is. Yeah, but most of all, it has been, Instagram, people talking about it on Instagram, या फिर Amazon पे reviews. That is the thing that has worked the most for me in the past. I don't know if it will work in the future, but I haven't really thought about it. Okay. So what's your current writing schedule as of now? Like every day you devote some particular hours to your writing, or it's like random कि कभी कोई thought आया तो phone में या डायरी में लिख लिया बाद में बैठ के लिख रहे हैं. How does it goes with you? नहीं वो तो मैं करता ही हूँ. I maintain everything on a cloud server. Okay. And I write in my phone, I write on my laptop. Sometimes I record a voice note and transcript it. But I devote around 4 to 5 hours a day to write and research. The writing is fine, but the research is very important. Research takes time, yeah. And that's important to you. Okay. Yeah, that is very important. Mm-hmm. Okay. So your first book was published in which year, sir? 2014 या 15 I think. 2014. Okay. ठीक है. That means pre-COVID, what I can say. So what I have personally seen, what I have personally seen, sir, that after the first lockdown was over, the numbers of author got increased very rapidly. Like एक boom था इस इंडस्ट्री में. मतलब हर वीक अभी भी अगर देखा जाए उस रेशियो से तो 100 से ज़्यादा बुक्स रिलीज हो रही हैं. एंड रीज़न बहुत सारे हैं. एक तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो गया है लिखने का, पढ़ने से ज़्यादा हो गया है व्हाट आई फील. एंड पब्लिशिंग काफ़ी ईजी हो गई है. सेल्फ पब्लिशिंग्स है, लिटरेरी एजेंट्स हैं, KDP इज़ देयर जो 1 घंटे के अंदर आपकी बुक लाइव कर सकता है ना. सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो, एज यू हैव कंप्लीटेड दिस होल जर्नी, आपने प्री कोविड से पोस्ट कोविड तक सब देख लिया. सो हाउ हार्ड इट हैज़ बिकम एज ऑफ नाउ टू मेक योर बुक स्टैंड आउट इन द मार्केट? I really wouldn't know. I really wouldn't know what it is that makes your book stand out. One thing that I can say for sure is that we as an audience have started reading Indian authors more now, which is why you will find more books coming from Indian authors. क्योंकि एक market बन गई है. That is the only thing that has changed, and that has changed post-COVID. Yes, it is correct, because COVID के time पे everyone had a lot of time. Everyone was working from home and schedules थोड़े से easy हो गए. The commute time was taken out of consideration. वो time was spent into writing. I don't know if the writing has got enough foundation of reading into it. I'm not the one to judge. So मैं नहीं बोल सकता. But yeah, we have, as a market, we have started reading a lot of Indian authors, which is why you have more Indian authors or books coming out in the Indian market. इसमें how to stand out,
I don't know, just be honest. Be unique. Your honesty is what is going to make you unique. And that is going to make you stand out. If you try to be someone else या be like someone else, वो तो नहीं होगा ना. Authenticity basically. Authenticity, honesty, मतलब जो है उसको जैसा है वैसे बताओ, वैसे लिखो. There's no need to flower coat it or sugar coat it rather. So now let's get back to the time when you heard that tomorrow your book will be live. Everybody will be able to buy it, judge it, and basically ऐसा सोचा जाता है कि एक ऑथर ने वही लिखा होगा जो उसके माइंड में चल रहा हो, है ना? So on that particular evening, what was going on your mind? Like, were you excited, relaxed? You just marked up some milestones कि इतने लोग जानते हैं, इतनी खरीदनी चाहिए किताब मेरी, इतनी बिकनी चाहिए किताब एक्चुअली मेरी. So what was on your mind? बिकनी चाहिए. I go into panic mode. मैं तो मतलब I'll find a place जहाँ पे कोई ऐसा ढूंढ नहीं सकता Robert, और मैं वहाँ पे रह जाता हूँ. I'll go and do something else. I'll either go for a run or I'll take my cycle out and go on a off-road trip or something like that. I panic. I don't even look. You just try to ignore कि ऐसा रिलीज हुई है नहीं, मुझे नहीं पता. I don't know. हाँ, I try to be very nonchalant about it. अच्छा ठीक है, हो गई यार. Okay. So when it comes to this book, sir, an evening full of glowworms, like आपने बताया बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें. So any particular story जो आपकी फेवरेट हो या आप रिकमेंड करें कि भले कुछ मत पढ़ना, ये वाली तो जरूर पढ़ लेना. Anything like that? You know, if I say this is my favorite story, people will read it and people will say नहीं यार हमें पसंद नहीं आई, and they like something else which I don't like that much. But yeah, there are a few stories. There's this one story about a rape victim, a rape survivor, जो मुझे बहुत पसंद है. There is this story about a bullied child, जो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे. And then there is this one story, unfortunately it's based on a true incident, and the incident turned out very differently. I just wish it had turned out the way I wrote it, but it turned out very differently. Yeah, these three stories kind of, they stick with me. So when it comes to focusing in life, so as a person, as an author, what are the things which you are focusing upon in life, Abhi, currently? Focusing on creating a good story, writing a good story, and I look for the stories in my day-to-day life. मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, mom है, so I just look for a good story with them. कि क्या अच्छा हो सकता है, what can be a good experience, जिसके बारे में you think 10 years later and you say wow, that was a good experience that we had. So I focus on that. Staying fit, obviously. मेरी age में you need to stay fit. Definitely. 50 books लिखने के लिए 50 characters पे you need to stay fit. Yeah, mentally fit is more important than physically fit. देखते हैं अभी आगे क्या होता है. So probably my last question to this podcast will be sir कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग लिखना चाहेंगे और they must be holding their first draft उनके लैपटॉप में, उनके डायरी में. So what would be your advice for those upcoming authors? Go for it. Go for it. Write. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? You'll fail. It's all right. Nobody will like your book. People will write bad reviews about your book. Nobody will read your book. कोई बात नहीं. उसको publish करो. Get a copy in your hands and see how it looks and feels. If it works, great. If it doesn't work, take that book, study it, देखो क्या change हो सकता है, and write your next book. Because something that I've been saying for a long time now, many years, anybody can write one book because everybody has a story to tell. The idea is writing the second book. And when you write the second book, write the third book. Keep writing. Don't stop at one.
Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Amit sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. Don't forget to buy and read the book. आप जस्ट अमेजोन पे जहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अमित डिसूजा सर की बुक आ जाएंगी. ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to be able to host you today. Thank you so much. Thank you so much, sir.